जो मुझे बोलना था, जो नैरेट करना था, वो रिजल्ट आ गया, तो आई अबैंडन्ड दिस पेंटिंग इन थर्ड लेयर ओनली। बट दिस इज, ये मेरी पर्सनल लाइकिंग वाइज इसकी जो कलर स्कीम है, इसका जो ओवरऑल इसकी जो लैंग्वेज है, दिस इज माय फेवरेट पेंटिंग। imafoundation.com is a registered organization in India 2019 and in London 2008. The art organization was established with the core purpose of identifying, supporting, and promoting the best of contemporary Indian artistic talent and traditions in the international arena. In particular, selecting, supporting, and promoting the artists deemed to be the future standard bearers for Indian art. The cultural traditions and endangered arts of India are also showcased and supported to ensure they inspire and engage a new generation. In 2017, Ima was chosen to represent India at UNESCO's World Humanities Conference held in Liège, Belgium, where the endangered arts of India and contemporary art was showcased. Ima continues to be committed to showcasing and cultivating the cultural DNA of the Indian nation. From April 2020 till the present, imafoundation.com is offering a live online art project which is focused on offering art training for all interested during the lockdown period. imafoundation.com is proud to present the works of the artist Swati Parikh. Self-taught artist Swati was educated in India and the UK, where she undertook graduate and postgraduate courses in chemistry and software development. Following her education, she continued to work as a software developer by profession. Prior to 2011, she worked and lived in the UK with little interest in Jainism. She relocated to Ahmedabad in 2011 to fulfill her childhood ambition to paint. Her life changed drastically after listening to the Jain Vikyanas in 2011. This is when her inner strength emerged and led her to recognize her true calling, which was to paint, the strong reverence she felt for the teachings of Jainism. An excerpt from the write-up about Swati by the well-known author Esther David describes well her journey so far. It is said dreams are realized from unknown sources. Transformation is part of Swati's artistic growth as she paints in a unique style of her own. The paintings are often vertical, similar to the concept of the Kalpala Vriksha, the source of life. Her main figures have calm and compassionate expressions as their eyes rivet the onlooker, along with their soft gestures, which speak volumes. In fact, these paintings are like narratives which connect one episode to another. Swati has created her own style of colour compositions and brushwork, as their vitality draws the viewer into the inner confines of her paintings. With soft feather-like brush strokes, her colours merge into a single hue and stimulate the eye. Swati creates a harmonious blend with contrasting colours like greens and mauves, which are accentuated with a classic use of white. Her eye for detail is also seen in the depiction of birds and other forms, as altogether these elements give a unique dimension to her mesmerizing compositions. Swati recreates her own interpretations of her spiritual beliefs in a contemporary context with her unusual compositions and soothing colour schemes. She has a distinct style of colour application which recreates quite another world, Swati's world. मेरा नाम राधा बिनोद शर्मा है। मैं शांति निकेतन एंड बड़ौदा दो स्कूलिंग में
पेंटिंग सिखाओ और सबसे प्रिय जगह है अहमदाबाद। 3 साल मैंने वहाँ पे अनऑफिशियल रिसर्च किया हो टेम्परेचर एंड टाइमिंग के ऊपर, वर्किंग क्लास के ऊपर, ज्यादा सा करके भटियार गली। तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट स्वाति पारिक। शी इज ए सेल्फ taught artist. Uh, Lots to learn from her and lots to different idea way of she gone through. Very interesting, and I want to share with our friend and family and audience. And imafoundation is a organization we look after contemporary, endangered, and indigenous art. And I am full-time artist. I like to work with all of art field in our country from India. I am very lucky. I might did some good thing in my past life. Today I can enjoy with our country's talent people. It is not that easy to get this opportunity. I'll use that word called opportunity. This you can't buy with anything. First of all, hello everyone. Thank you for joining in. I'm Swati. I'm a self taught artist. My main driving force to paint is my strong liking towards the teachings of my religion. And every time I listen to these stories, then I think about the qualities which I really, really wanted to record on canvas, how I feel and what I learned from that story. And that's the main reason I paint in most cases. From 2011 to 2014 was quite a self-study period for me. And in this time, I was doing hundreds of these types of works where I was really trying to understand the impact of lines, the space division, the form on the surface, the colors, the technique, etc. So this was like implementation of loads of different aspects of art, and understanding my own self and to work out my own way to paint. So until 2014, I think it was quite a period for training for myself. This all of work we are doing 2011 to 2014 right now. Yeah, they are like a study. Okay. And you was trying to get through Yes, inner yes, journey. understanding different mediums and everything, the arrangement of the elements, understanding the mass value of the form, understanding the focal view of the painting, and everything, to be honest. ये सब जो है, these are soft pastels on tinted papers. And this is where I was trying to get through the contrasting colors, trying to study the brushwork, and those lines which interestingly divides the surface creates some kind of psychology. And at the same time, I wanted to keep them soft. So this is what I was trying to achieve. I don't know how many hundreds of this. It's quite small work, very beautiful. Thank you. This is a starting journey, I think. Yes. This is where I started putting little bit of Jainism in work. They are in language Prakrit, Arihante Kittaisam, Ego Ham Natti Me Koi. They are very beautiful. I mean, I'm just in love with these words. That's why I have put them in. Arihant means Ari and Hant. Ari is Shatru, enemy. Yeah.
but not the external enemies, our internal enemies, like when we jealous or when we have bad qualities. Those are our enemies, and people who have uh, won over this. हंत means हणी नाखू गुजराती में, अरिहंते, जिन्होंने अपने बैड क्वालिटीज को जीत लिया है. कित्तइसम, उनका मैं कीर्तन करता हूँ, मतलब कि उनकी मैं वंदना करता हूँ. एगो हम नथी में कोई. If you think about very carefully, deep inside, you will realize in the end, you are the only one who can help yourself. Nobody else can. एको हम नथी में कोई, मैं अकेला हूँ और कोई मेरा नहीं है, सच में तो that's what it means. So these texts are in Prakrit language, very ancient language. लोगस उज्जो अगरे, जिन्होंने अपने अंदर के शत्रु को जीत लिया है, वो लोगों में सबसे उजागर है. लोगस उजागरे दम्मत इत्थयरे जी ने. ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो खुद ही धर्म के तीर्थ होते हैं. दिस इज व्हाई आई पेंट, दिस इज व्हाई दैट यू नो, इवन यू फेल्ट दैट रेवरेंस राइट नाउ, राइट? I also love to paint nature, but in my own way. For me, a leaf can hold flowers. For me, leaf can smaller and flower can be bigger. I don't know, but yeah, this is the way I paint. Most important thing for me is I enjoy when I paint. That's it. This is your inner perspective in your work. Yeah. Perspective, if you go scientifically, this is different. And your inner layer of perspective is different. Yeah. This is you are working from your inner understanding, inner feelings, inner liking and disliking perspective. This is the bigger perspective than our scientific perspective. Yeah. This is very the true. artist's world, actually. Wow. Yeah, these are first oil paints for Jainism. That lion means, you know, when your inner soul is so strong like a lion, every problems in your life, they are like mice. That's what it means. Actually started implementing what I learned during my self-study into my real work of Jainism. There is nothing much to say now. They are all episodes from the lives of Jain monks or Jain sages. उसको कुछ नहीं चाहिए, उसके पास सब कुछ है. Really enjoyable that here. I want people to know his soil, not me only. हमारे कोई भी religion होते हैं, तो they are all based on qualities that we need to achieve. Basically, there are two types of souls or jivas, जो एक मुक्त हो गए हैं और हम सभी जो बाकी है अभी. There are mainly two categories. और जिन जिनको भी वहां पे पहुंचना है, तो उनको एक जर्नी तय करनी होती है, और उसका जो प्रोग्रेस होता है, that can only happen when you achieve qualities, when you acknowledge your bad qualities and you start getting rid of them, right? और आप वो गुण जिसको बोलते हैं, उन गुणों को ग्रहण करने का शुरू करते हैं, और जो आपके दुर्गुण है उनको निकालने की शुरुआत करते हैं, तब भी आपकी मोक्ष की तरफ जर्नी शुरू हो पानी है, regardless of which religion you follow. So all these stories, all these episodes, they show some kind of qualities. जैसे कि मितारिया मुनि करके ये जो स्टोरी का एपिसोड आई हैव पेंटेड, उसमें मितारिया मुनि के सिर पे बंधा हुआ है एक चामर, जो चमड़ा होता है, सोनी के पास होता है. जो सोनी खड़ा है, उसको लगता है कि उसके सोने के जो राइस उसने बनाए हैं वो मुनि ने लिए हैं. एक्चुअली जो बर्ड है उसने वो खा लिए थे. तो मुनि नहीं चाहते थे कि वो सोनी बर्ड को मार डाले, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला. वो झूठ भी नहीं बोलते हैं. तो सोनी ने उनके माथे पे चमड़ा बांध दिया. जैसे जैसे सन
ज्यादा आकाश में ऊपर जाएगा वो चमड़ा श्रिंक होता है और मुनि की खोपड़ी टूट जाती है, फिर भी मुनि समता से सहन करते हैं। तो वो जो समता, जो सहनशीलता, उसकी क्वालिटी ये पेंटिंग में मैंने ट्राई टू कैप्चर। ये अषाढ़ाभूति मुनि करके हुए थे, उनकी स्टोरी है। तो बेसिकली उनका जो रिनंसिएशन हुआ था वो लास्ट में जो आपको दिख रहा है इन द बॉटम कॉर्नर, वो स्टेज पे नाटक करते करते उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उनका रिनंसिएशन हुआ था। ये पेंटिंग तो मुझे इच्छा भी हुई थी क्योंकि उसमें थोड़े छोटे छोटे बहुत ज्यादा एपिसोड्स थे पूरी स्टोरी में, जो आपने बोला इसके आगे का पेंटिंग। यूजुअली और सारे पेंटिंग देखोगे तो उसमें मेरी टेक्निक रहती है कि आई पुट अ ह्यूज मास फॉर द फोकल पॉइंट, राइट? जो सबसे मेन सब्जेक्ट होता है उसका बड़ा सा मास होता है, and the rest then I fill up with nature or any other small episodes. But in these paintings everything was so important: how Muni came back to sansar, and then how what phases he passed through, and then in the end how he achieved renunciation. तो ये टेक्निक वाइज थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें कोई बड़ा सा मास नहीं है, इट इज द scattered work. Yeah, so I enjoyed all the scattered forms. This is the story of Revati Shravika. So we have 24 lords in Jainism, 24 Tirthankara, but it is the religion of equality. So anybody who achieves good qualities, they can be Tirthankara. So Revati is going to be one of the Tirthankara in next 24 lords. Current 24 are already we are in the era, और ये भी एंड हो जाएगा, फिर नई साइकिल शुरू होगी तो उसमें नए 24 अरिहंत होंगे न तीर्थंकर, उसमें से रेवती का जो जीव है वो एक तीर्थंकर बनेगा। This is a series called Kalpa Vruksha, which I did in 2021 to 2022. It was the series of 10 same size oil paintings. Kalpa Vriksha means wish tree. So according to Jainism, there are 10 types of Kalpa Vriksha and each have specific jobs. So Jyotishikanга वो सूर्य प्रकाश के जैसा प्रकाश देते हैं. Manyang is the Kalparuksha, which gives jewelry. This Kalpavruksha is called Gihanga in Prakrit or Grihakar in Gujarati or Hindi, which gives Grih. Grih means आवास, रहने का स्थान, accommodation. तो मेरा जो काम है वो थोड़ा एज यू ऑल सी थोड़ा फ्रीडम से होता है, तो गृह या घर बनाने में थोड़ा सा जोग्राफिकल शेप का अगर मैं अप्लाई करती तो वो थोड़ा सा रियलिस्टिक तरफ चला जाता. That is why I have put elements of house, like I have put the entrance, I have put uh, swing, I have put the window and bed in which the yugliks are resting. So this is how I painted Grihakar. So it has the elements of tree, which means it's a tree. It has the atmosphere of wish tree,
and it has elements of house. This is a Kalpavruksha called Chitra Rasang, and it is meant to give us ras means भोजन. तो मैंने अपने हिसाब से उसमें बताया है कि वो दोनों खा रहे हैं. और ये सीरीज के बारे में एक और बात है कि दिस इज अबाउट युगलिक्स. ये ऐसे पायर्स लोग होते हैं जो सतयुग के एरा में ही दे आर देयर, अभी नहीं होते हैं. और ये एज अ जुड़वा ही उनका बर्थ होता है, युगलिक बोलते हैं उनको, और उनकी ही मैरिज होती है. और ये इतने इनके पास सब कुछ होता है क्योंकि इनके एरा में कल्पवृक्ष होता है. उनको कुछ भी चीज की जरूरत ही नहीं, उनके पास सब कुछ जो होता है, लेकिन उनकी कोई डिजायर ही नहीं होती है. हमारे जैसे नहीं होता है कि थोड़ा सा कुछ मिला और उछलने लगता है. ये इतने पायर्स, इतने यू नो इतने क्वालिटी वाले पीपल होते हैं. और अकॉर्डिंग टू जैनिज्म इनकी नेक्स्ट लाइफ में ये देव या देवी ही बनते हैं. और तो क्योंकि उनको इतना कुछ चिकने कर्म ही नहीं होते हैं, वो हमारे जैसे नहीं होते हैं ये चाहिए वो चाहिए. और एक दूसरे के साथ होते हैं लेकिन एक दूसरे में कभी इंटरफियर नहीं करते हैं. और ये पेंटिंग कैप्चर्स एवरीथिंग अबाउट युगलिक्स, एवरीथिंग अबाउट दैट एरा. और आर्ट पर ये सब्जेक्ट की बात हुई, और आर्ट की बात करूँ तो ये पेंटिंग में जो एक सिंप्लिसिटी है और उसका जो नरेशन, वो मुझे जैसा मुझे पसंद है, दिस इज फॉर अबाउट माय पर्सनल लाइकिंग. तो बाकी सारे पेंटिंग्स में मैंने 15-20 लेयर तक काम किया था. इसमें थर्ड लेयर में ही जो फीमेल कैरेक्टर है उसकी जो एक मिस्टीरियस उसका जो कैरेक्टर है, फिर जो मुझे बोलना था, जो नरेट करना था, वो रिजल्ट आ गया. तो आई अबेंडन्ड दिस पेंटिंग इन थर्ड लेयर ओनली. बट दिस इज, ये मेरी पर्सनल लाइकिंग वाइज इसकी जो कलर स्कीम है, इसका जो ओवरऑल इसकी जो लैंग्वेज है, दिस इज माय फेवरेट पेंटिंग. This is Kalpavruksha called Chitra Rasang, and it is meant to give us ras means भोजन. तो मैंने अपने हिसाब से उसमें बताया है कि वो दोनों खा रहे हैं. और ये सीरीज के बारे में एक और बात है कि दिस इज अबाउट युगलिक्स. ये ऐसे पायर्स लोग होते हैं जो सतयुग के एरा में ही दे आर देयर, अभी नहीं होते हैं. और ये एज अ जुड़वा ही उनका बर्थ होता है, युगलिक बोलते हैं उनको, और उनकी ही मैरिज होती है. और ये इतने इनके पास सब कुछ होता है क्योंकि इनके एरा में कल्पवृक्ष होता है. उनको कुछ भी चीज की जरूरत ही नहीं, उनके पास सब कुछ जो होता है, लेकिन उनकी कोई डिजायर ही नहीं होती है. हमारे जैसे नहीं होता है कि थोड़ा सा कुछ मिला और उछलने लगता है. ये इतने पायर्स, इतने यू नो इतने क्वालिटी वाले पीपल होते हैं. और अकॉर्डिंग टू जैनिज्म इनकी नेक्स्ट लाइफ में ये देव या देवी ही बनते हैं. और तो क्योंकि उनको इतना कुछ चिकने कर्म ही नहीं होते हैं, वो हमारे जैसे नहीं होते हैं ये चाहिए वो चाहिए. और एक दूसरे के साथ होते हैं लेकिन एक दूसरे में कभी इंटरफियर नहीं करते हैं. और ये पेंटिंग कैप्चर्स एवरीथिंग अबाउट युगलिक्स, एवरीथिंग अबाउट दैट एरा. और आर्ट पर ये सब्जेक्ट की बात हुई, और आर्ट की बात करूँ तो ये पेंटिंग में जो एक सिंप्लिसिटी है और उसका जो नरेशन, वो मुझे जैसा मुझे पसंद है, दिस इज फॉर अबाउट माय पर्सनल लाइकिंग. तो बाकी सारे पेंटिंग्स में मैंने 15-20 लेयर तक काम किया था. इसमें थर्ड लेयर में ही जो फीमेल कैरेक्टर है उसकी जो एक मिस्टीरियस उसका जो कैरेक्टर है, फिर जो मुझे बोलना था, जो नरेट करना था, वो रिजल्ट आ गया. तो आई अबेंडन्ड दिस पेंटिंग इन थर्ड लेयर ओनली. बट दिस इज, ये मेरी पर्सनल लाइकिंग वाइज इसकी जो कलर स्कीम है, इसका जो ओवरऑल इसकी जो लैंग्वेज है, दिस इज माय फेवरेट पेंटिंग. These are all now kalpavrikshas. This is a kalpavruksha called Aniyat,
नियत मीन्स जो तय होता है, अनियत मीन्स जो तय नहीं होता है, मीन्स एनीथिंग यू आस्क फॉर। तो इसमें मैंने अपने तरीके से अनियत को डिपिक्ट किया है, जैसे कहीं पे जूल्स रखे हैं, कहीं पे घर रखा है, कहीं पे हॉर्स कार्ट रखी है, टू गेट दैट कैरेक्टर ऑफ अनियत कल्पवृक्षा। सब कुछ जो भी आप मांगो वो देता है। This is the story of a person called Nandish and Muni. Nandish and Muni is carrying his Guruji, because Guruji is very old, and this is about the Guru Bhakti. This is a long story, and he was a prince. But in this episode, he was chanting uh, Arihant's name. So that's why I have put, and he was chanting for our 22nd Tirthankar called Neminath Bhagwan. Uh, uh, yes, Neminath Bhagwan. And I love his name. His name is Arisht Nemi. So that is why I have put some, text floating on the corner. This is again Nandish and Muni.